So let us start the class. Just give me a moment. कैलेंडर में इसके लिए कुछ मेंशन है क्या? क्लास 2 कैंसिल है? Okay. So we will see what will happen in the evening. अगर क्लास रही तो लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं रही तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी. So in the last class हम लोगों ने क्या किया था? We have learned about vector subspace. For vector subspace, we have seen that the definition says that let V over F be a vector space. A subset W of V is said to be a subspace of this V if W itself is a vector space over F with respect to the vector addition and scalar multiplication defined on V. Means whatever the operations and field are defined, if the W form the vector space in respect to the same operation and same field, then we will call that as a subspace. Am I right? After that, we have seen some examples for that, probably 6, 7. Here I have mentioned only 3. Then we have stopped here that I need to prove a subspace test, because whenever we are proving the subspace, basically what we are doing, first thing we are seeing whether W is a subset of V or not, and then itself we are going to verify all 8 properties of vector space. Then we conclude that this W is a vector subspace or not. Now today I will prove a theorem which says that if V over F is a vector space and W is a subset of V, then W is a subspace of V if and only if this 0 vector belongs to W, 0 vector of V. If xy belongs to W, then x plus y should also belongs to W, and if x belongs to W and C belongs to F, then C into x also belongs to W. Let us see its proof. Theorem says what? Let V over F be a vector space and W be a subset of V. Then who is this? Saurabh, you want to ask anything? Saurabh, you want to ask anything? If no, please mute your mic.
then W is a subspace of V if and only if first thing is what? Zero vector of V should belong to W. Second thing is what? For xy belongs to W, x plus y belongs to W, and third is what? For C belongs to F and x belongs to W, Cx belongs to W. Now let us verify one by one. If and only if का मतलब क्या होता है ये आप लोग को पता है ना? Necessary as well as sufficient. Yes, ma'am. Okay. So first we will assume that this W is a subspace of V, and then we will show that these three properties hold. And second, we will assume these three properties hold, and then we will show that this W is a subspace. So for first part, we will see, we will take, let W be a subspace of V. If W is a subspace of V, so can I say that W itself will be a vector space? Yes. Therefore, W itself is a vector space. Over the same field and same operations. Now please tell me, if this W is itself a vector space, there will be some zero vector for this W. अगर ये Yes, W ma'am. होगा, so let 0 dash bar B belongs to W be the zero vector of W. Can I assume that? Right? कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. कर सकते हैं. तो अगर ये 0 बार हमारा 0 बार डैश अगर ये 0 वेक्टर है W का, so will it give 0 बार डैश प्लस 0 बार डैश इज इक्वल टू 0 बार डैश, क्योंकि ये 0 वेक्टर है. 0 वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी वेक्टर में ऐड होगा तो वही वेक्टर देगा. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now let 0 belongs to V be the 0 vector of V. Then this 0 is a member of V and this 0 bar dash W का मेंबर है, W सब स्पेस है, तो क्या इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि 0 बार डैश प्लस 0 बार इज इक्वल टू 0 बार डैश, क्योंकि ये 0 बार डैश तो हमारा जाएगा फाइनली V में ही ना. Yes, ma'am. So this will hold. Yes. Second equation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now from first and second, what we are seeing, right side is equal, therefore left side will be equal. Yes, ma'am. From 1 and 2, we have
0 bar dash plus 0 bar dash is equal to 0 bar dash plus 0 bar. Am I right? And this implies 0 bar dash is equal to 0 bar by left cancellation law. याद है left cancellation law? Yes, ma'am. Yeah. So by applying left cancellation law from here, can I conclude that 0 bar dash is equal to 0 bar? Yes, ma'am. And this implies that 0 bar belongs to W, right? So first property is proved. Now let us see for second and third one. Since this W, again I will repeat, this is a vector space itself. So अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा. Moreover, for x y belongs to W, x plus y belongs to W, and C belongs to F, x belongs to W, Cx belongs to W. Can I say that? Why it will happen? Because W over F is itself a vector space. Am I right? बताइए, एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया क्या? सी, हम फिर से रिपीट करते हैं. हम क्या लेके चले? हमें दिखाना था कि अगर W सब स्पेस है V का तो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी है. हमने माना कि W एक सब स्पेस है V का. अगर ये W सब स्पेस है V का तो हमारे पास क्या होगा कि W इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस होगा एंड W जो होगा वो सबसेट ऑफ V होगा. W is a subset of V and this W itself is a vector space. So what will happen if this is a vector space? Please mute your mic. If this W is itself a vector space, it has some zero vector. That zero vector I have noted by 0 bar dash. मेरी क्लास कब हो रही है? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Kriti, please mute your mic. Yes, ma'am. आप लोग ऐसे अनम्यूट मत कीजिए खुद को. अगर क्लासेस डिस्टर्ब होती है इससे सब तक आवाज नहीं पहुंचती. अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तब अनम्यूट करिए ना. इसीलिए हम आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं. अदरवाइज हम क्लास पूरी म्यूट करके पढ़ा देंगे. प्लीज डू नॉट डू दिस. Okay, so this W is a vector space itself. It has some zero vector. I have denoted that zero vector by 0 bar dash. If this 0 bar dash is a zero vector, so its sum with 0 bar dash will be the same 0 bar dash by property of zero vector. And on the other hand, what we have, V हमारा खुद भी एक सब वेक्टर स्पेस है. तो इस V का भी तो कोई जीरो वेक्टर होगा. उस जीरो वेक्टर को हमने 0 बार से डिनोट किया. अब ये W इस खुद V में जा रहा है तो ये 0 बार डैश एक मेंबर होगा हमारा V का. और फिर ये जीरो वेक्टर अपना रोल प्ले करके ये कहेगा कि 0 बार डैश प्लस 0 बार इज इक्वल टू 0 बार डैश. Now from first and second equation what we are seeing that right side of both equations are same. So the left side will be also equal. Now from 1 and 2 what we will obtain that 0 bar dash plus 0 bar dash is equal to 0 bar dash plus 0 bar. And now by applying the left cancellation law of vector space what we are finding this 0 bar dash will be cancelled from one side
and we will obtain 0 bar dash is equal to 0 bar. तो जो जीरो वेक्टर हमारा v का था वही जीरो वेक्टर हमारा w का होगा, वो चेंज नहीं होगा. क्लियर? Yes, ma'am. Clear. And other two properties what we have to show, that whenever xy belongs to w, then x plus y also belongs to w, and whenever c belongs to f and x belongs to w, then cx belongs to w. Now I will again use the property of vector space. Since this is a vector space, the operation will be well defined on it, and therefore we can conclude that whenever x, y are two members of w, then x plus y will also belong to w due to closure property. वेक्टर स्पेस है तो पहले ऑपरेशंस डिफाइंड होंगे ना. Yes, ma'am. एंड सेकेंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर c हमारा f में है, x w में है, तो फिर cx भी हमारा w में जाएगा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वेल डिफाइंड होना चाहिए वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए. तभी तो हम बाकी की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे ना. Yes, ma'am. Yes. So one sided is proof. Now we will go for the second side. Second side, what we will assume? We will assume that these three properties hold, 1, 2 and 3. And then we will try to show that this W forms a subspace of V. Okay. So let 1, 2 and 3 hold. एक मिनट, अभी आप लोग यहाँ इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन दोनों का नोटेशन हमें चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे 1, 2, 3 आ गया है ना. मैम ए भी कर दीजिए. वेट करिए. Let 1, 2 and 3 hold, then first will say, second will say what? For, then from second and third, what we have, second and third we have that for any xy belongs to w, x plus y belongs to w, and for every c in f, x in w, cx belongs to w, these two things will hold. इसको c बोलते हैं, इसको d रिप्रेजेंट करते हैं. होल्ड होगा ना. 2 और 3 तो हमारा यही है ना. प्लीज आंसर. Yes. ठीक है. फील्ड हमारा गिवन है, ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में सेट क्लोज है, तो क्या हम रिमेनिंग प्रॉपर्टी के लिए अप्रोच लें, क्योंकि प्रीवियस जो नेसेसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो अब क्या बचता है? सबसे पहले आती है हमारी एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि फॉर एवरी एक्स वाई जेड इन डब्ल्यू, x plus y plus z should be equal to x plus y plus z. Right? Now we will take, ये हमें प्रूफ करना है. एसोसिएटिविटी ये कहती है ना. Now we will take x, y, z belongs to w arbitrary. Since this w is a subset of v, then can I say that this x, y, z belongs to v? Right? होगा ना. w का Yes, ma'am. होगा. सबसेट है, और ये क्या कह देगा कि w एक वेक्टर स्पेस था. सो दिस विल इंप्लाई व्हाट? x plus y plus z is equal to x plus y plus z. Right?
by associativity property of V यही होगा ना? Yes, ma'am. Similarly, what about commutativity? कम्यूटेटिविटी के लिए फिर से हम मानेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आर्बिट्रेरी। अब फिर से ये W जो है हमारा V का सबसेट है, तो ये V में जाएगा और V में जैसे ही जाएगा हम लोग को पता है कि V वेक्टर स्पेस है, दैट्स वाई x प्लस वाई विल बी y प्लस एक्स, राइट? Yes, ma'am. हमने क्या किया, एक्स वाई डब्ल्यू में आर्बिट्रेरी लिया था, लेकिन आर्बिट्रेरी एक्स वाई के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि ये खुद V में कंटेन्ड है और V में ये प्रॉपर्टीज इन वेक्टर्स के लिए होल्ड हो रही हैं। थर्ड क्या आता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आता है फर्स्ट वाले से हमारे पास है कि नोटेशन सेम हो जा रहे हैं, आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट वाले से हमारे पास क्या है? फ्रॉम 1 जीरो वेक्टर जो V का है वो W में बिलोंग कर रहा है, और क्योंकि ये जीरो वेक्टर है V का, सो फॉर एवरी x in V we have x plus 0 bar is equal to x, right? Due to property of zero vector. Yes, ma'am. Yes. And this will imply as what? क्योंकि W हमारा सबसेट है V का, तो जब V जो प्रॉपर्टी V के लिए होल्ड हो रही है वो सारे, जब X हमारा W में बिलोंग करेगा तब भी तो ये होल्ड होगा ना? Yes, ma'am. This implies okay, sorry. This implies x plus 0 bar is equal to x for every x belongs to W, because this W is a subset of V. क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने क्या दिया कि ये x प्लस 0 वेक्टर हमारा W में बिलोंग कर रहा था बस, और V में तो ये 0 वेक्टर V का था, इसलिए x प्लस 0 बार इज इक्वल टू x दे रहा था फॉर एवरी x इन V। W हमारा इसी का एक सबसेट है, तो जो वेक्टर्स W में है उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट दिस 0 बार is a zero vector of W? Yes or no? Yes, ma'am. This will hold. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स, है ना? एडिटिव इनवर्स और इनवर्स वेक्टर। नाउ वी हैव रेड, एडिटिव इनवर्स होती है। हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था क्या कि अगर हमारे पास कोई स्केलर है a और कोई वेक्टर है x, तो माइनस ऑफ a x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x। माइनस a से अगर हम x में मल्टीप्लाई करते थे तो इनवर्स वेक्टर बन जाता था हमारा ax का, रिमेम्बर? Yes, ma'am. बनता था। राइट? तो यहाँ पे फील्ड में हमारा वन वेक्टर हमेशा होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू f।
है ना? Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एफ और ये एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसका कुछ इनवर्स भी होगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एफ खुद में फील्ड होता है। फील्ड में हर नॉन जीरो नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हर नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स, है ना? याद आया? देखिए, for each x there is a element minus x which gives x plus minus x is equal to 0. एडिटिव इनवर्स सबके लिए एग्जिस्ट करता है, जीरो हो या नॉन जीरो हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है। Am I right? Yes, ma'am. So from here, if 1 belongs to f, then minus 1 will also belongs to f. Why? Because f is a field. Belong करेगा? This I am concluding from basic properties of vector space. And if minus 1 belongs to f, then for minus 1 belongs to f and x belongs to f, minus 1 into x will belongs to f. Sorry, v. Sorry, w. For x belongs to w and minus 1 belongs to f, minus 1 into x will belong to w by property third, this one. See here, for any c belongs to f, x belongs to w, c into x belongs to w. So from this, can I say that if minus 1 into x belongs to w, this is what? Nothing but our inverse vector of x. Yes, ma'am. So what we are finding, for every x in w, there exists minus x in w such that x plus minus of x is equal to 0 vector, right? And this will imply what? Existence of inverse vector completed. Our existence of inverse vector hold? Yes, ma'am. इसके बाद कौन सा आता है? 1 into v की स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला. Now 1 belongs to f and v belongs to x लेते हैं सॉरी. X belongs to w. Then again by scalar multiplication property, third property, one into x will be equal to x, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है फील्ड की, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर किसी वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आती है तो फिर से वही स्केलर देती है ना? इसकी प्रॉपर्टी यही Yes. है ना? Yes, ma'am. So this property will also hold. Now we will come to sixth one, which says that A into BB is equal to AB into V. So
A into BV is equal to AB into V will x ले देते हैं, x लेके चल रहे थे। अब अगर ये देखिए, पहले हमने क्या किया, लेट A B belongs to two scalars which belongs to F and X be any member of W। अगर ये मेंबर X हमारा W का है, W हमारा एक सबसेट है V का, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि A B belongs to F and X belongs to V? बताइए। यस मैम, करेक्ट। अगर ये इम्प्लाई करेगा तो वेक्टर स्पेस में ये अब सारी चीजें हो रही हैं V में, तो यहां से तो हमें ये चीज प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स। बाय प्रॉपर्टी ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, V का यस मेंबर है ना, V और F का। तो इनिशियली हम लोग x को W में लेके चले थे, क्योंकि ये W V में कंटेन था, इसलिए ये प्रॉपर्टी सारे W के लिए होल्ड होगी। यही था ना, यस मैम, ये था। ये वाला कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद फील्ड मल्टीप्लिकेशन। सो ये भी होल्ड हो गई। अब रिमेनिंग क्या बची है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो लेट A B belongs to F and X belongs to W, then this implies that A B belongs to F and X belongs to V, since this W is a subset of V, and since this V is a vector space over F, so this will imply A plus B into X is equal to AX plus BX। बताइए। And similarly, for A belonging to F, X, Y belonging to W, can I write A X plus Y is equal to AX plus AY? क्योंकि यहाँ पे फिर से हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि ये हमारा V का सबसेट है, V का सबसेट है, और तो ये मेंबर्स हमारे V में जाएंगे। अगर V में जाएंगे तो V में हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही थी, इसलिए A into X plus Y is equal to AX plus AY for every A belonging to F and XY belonging to W. Please reply. यस मैम। So ये हमारी 8वीं प्रॉपर्टी हो गई। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम बस 3 ऑपरेशंस लेके चले थे, इनमें 3 प्रॉपर्टीज लेके चली थी इस W के लिए। क्या था वो, कि पहला तो एक जीरो वेक्टर जो V का है वो W में बिलोंग करता हो, और बाकी के दो क्या थे कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में W क्लोज्ड हो। बस इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज हमने दिखा दिया कि ये W हमारा सब स्पेस है, क्योंकि यही 3 प्रॉपर्टी हमें एनफ इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि ये W हमारा वेक्टर स्पेस हो जाए, राइट। सो फ्रॉम हियर कैन आई कंक्लूड दैट दिस W over F is a vector space? Please say. W over F एक वेक्टर स्पेस है, W सबसेट ऑफ V ऑलरेडी गिवन है, एंड therefore W is a subspace of V.
करेक्ट? एक बार रिवाइज कर लीजिए, किसी को कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो प्लीज आस्क। Any query? No, ma'am. ओके, सो अब से अगर हम लोगों को वेक्टर सब स्पेस चेक करना हुआ तो हम आठों प्रॉपर्टी नहीं से चेक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बस ये देखेंगे कि क्या जो v का जीरो वेक्टर है वो w में बिलोंग कर रहा है, और अगर वो बिलोंग कर गया देन हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिमेनिंग टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब बेसिकली हम ये तीनों प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या होल्ड हो रही है। अगर होल्ड हो जाएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारा वेक्टर सब स्पेस है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होल्ड हुआ देन वी विल कंक्लूड दिस इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस, राइट? Another important result is what this says, that if V over F is a vector space and Wi for I some index is a collection of subspace of V, then the intersection of all these subspaces will also be a subspace of V. Let us see this one also. This one also important. Let collection of wi such that I belongs to some index set I. इसका मतलब पता है ना आप लोगों को, I belongs to index set of I, मतलब ये I एक कोई सीक्वेंस डिफाइन होगा, कोई नंबर डिफाइन होगा, उनमें जितने भी ये उनमें जो भी ये I बिलोंग करेगा उस wi के लिए ये एक सब स्पेस होगा, be a subspace of V. Then W, which is intersection of each of these wi for I belonging to I, is also a subspace. तो अभी हमने जस्ट प्रीवियसली आप लोगों को क्या प्रॉपर्टी बताई सब स्पेस वेरीफाई करने की? बताइए। मैम एक बार फिर से लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा? ये इस रिजल्ट का या फिर नहीं, रिजल्ट 2 का लाइन जो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, रिजल्ट 2 का लाइन हमें ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास W1, W2, W3, W4 कोई सब स्पेसेज हैं V के, ठीक है? ये चारों इंडिविजुअल सब स्पेसेज हैं V के, तो जो इनका इंटरसेक्शन डिफाइन होगा W, which will be W1 intersection W2 intersection W3 intersection W4, ये भी एक सब स्पेस होगा। इसी सेट को यहाँ पे हमने बस 4 मेंबर इसमें इंक्लूड किए, पर ये जरूरी नहीं है कि 4 ही मेंबर हो, जितने भी आप डिफाइन कर सकते हो सब स्पेस, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट अगर भी होते हैं तो भी, कि उनका इंटरसेक्शन ये हमेशा सब स्पेस होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने बस सीक्वेंस डिफाइन किया wi वेयर I बिलोंग्स टू n, कि ये कोई सीक्वेंस है सब स्पेसेज का, then this intersection of wi for I in n will also be a subspace of V. Are you getting my point? नो मैम।
नहीं, अब हम कैसे समझे? अच्छा ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारे थ्योरम का कि मान लीजिए W1 W2 कोई दो सब स्पेस है V के, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है इस लाइन में? W1 W2 आर एनी टू सब स्पेसेज ऑफ V? नो मैम। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, देखिए फिर ये W1 W2 क्या होगा? कोई सबसेट होगा V का, राइट? W1 is a subset of V and W2 is also a subset of V. तो इनके इंटरसेक्शन से भी तो एक सेट फॉर्म होगा ना, सबसेट, जो कि फिर से V यस का मैम, सबसेट होगा। सबसेट होगा यस ये मैम तो होगा। हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर ये सब स्पेस हुए तो ये केवल सबसेट नहीं होगा, ये खुद भी एक सब स्पेस बन जाएगा V का। नाउ क्लियरली अंडरस्टैंड मैम। नाउ इट इज क्लियर ना? अभी हमने बस दो मेंबर लिया, क्योंकि हम लोगों को ये भी पता है कि WI अगर सबसेट है V का, फॉर एनी सेट I इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जिसमें हम अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं कि इसमें फाइनाइट मेंबर होंगे, इनफाइनाइट मेंबर होंगे, ये यूजर की चॉइस होती है कि वो इसमें कितने मेंबर्स लेना चाहता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ WI खुद एक सबसेट होगा V का फॉर I बिलोंगिंग टू I, है ना। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट जाते हैं? जो सब में कॉमन रहेंगे। यस मैम। और अगर सब में कॉमन है तो वो V में भी तो जाएगा ना। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ WI जो है फॉर I इन I, वो भी एक सबसेट होगा V का। यस अगर ये WI सबसेट के साथ साथ सब स्पेस भी हो गए तो जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी सब स्पेस हो जाएगा, वो भी केवल सबसेट नहीं रहेगा। That's what it the theorem says that if WI for I belongings to I be a subspace of V, then W, which will be intersection of each of this WI, is also a subspace of V. Clear? यस मैम। Okay. Now we will come to proof of this. अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमें सब स्पेस प्रूफ करना है तो क्या क्या प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होगी? एक तो जीरो वेक्टर V का बिलोंग करता हो, और दूसरा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, राइट? यस सिंस each WI is a subspace of V, है? एवरीबॉडी इज एग्री विद मी? क्योंकि ये तो गिवन है मैम, ना। आज रिकॉर्डिंग नहीं होने क्या है? रिकॉर्डिंग ऑन है? ऑन तो है। ओके, सो अब थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सब स्पेस है तो उसमें तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। सो दिस विल इम्प्लाई व्हाट? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? जीरो वेक्टर ऑफ V belongs to WI for every I in I. यस मैम। अगर हर WI में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये भी हमें इम्प्लाई कर देगा कि जीरो बार बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I in I, WI? सारे Yes, ma'am. WI में जा रहे हैं
इनके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन ये क्या डिफाइन है, W. सो 0 बार बिलोंग्स टू W. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. Yes, ma'am. Now for second one, let x, y be any two member of W. क्योंकि हमारा जब W में जाएगा तभी तो हम देखेंगे ना कि हमारा वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है या नहीं, उसके डोमेन के एलिमेंट से ही देखेंगे ना. सो W हमारा डिफाइन कैसे है, Yes. इंटरसेक्शन ऑफ I in I WI, right? So this will imply what? This xy which belongs to W belongs to every WI. For every I belongs to I. क्योंकि इंटरसेक्शन में जा रहा था ना, इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट्स जाते हैं ना जो सब में बिलोंग करते हैं. Yes, ma'am. अब ये WI खुद सब स्पेस है. रिमेंबर हम लोगों ने पहले ही लिया हुआ है कि ईच WI सब स्पेस है. सो वेदर दिस विल इम्प्लाई x plus y belongs to WI for every I. प्लीज आंसर. WI सब स्पेस है. सर स्पेस है तो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा, और क्लोज होगा तो अगर एक्स वाई हमारा WI में जा रहा है तो x प्लस वाई भी WI में जाएगा. करेक्ट. क्या हुआ, कोई डाउट है? अब अगर ये हर WI में जा रहा है तो कैन आई से दैट दिस x प्लस वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ I इन I WI. ये सब में था ना, सब में था तो इंटरसेक्शन में जाएगा, जी मैम. राइट. और ये इंटरसेक्शन हमारा डिफाइन है W. तो हम क्या लेके चले थे कि एक्स वाई कोई दो मेंबर था W का, और हमें लास्ट में क्या मिला कि x प्लस वाई भी हमारा मेंबर हो रहा है W का. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो होल्ड फॉर बीइंग अ वेक्टर सब स्पेस. यही था ना. सी Yes, ma'am. दूसरा Yes, ma'am. वाला एक्स वाई जब बिलोंग कर रहा था तो ये भी था. अब तीसरा वाला देख लेते हैं होल्ड होगा कि नहीं. अगर होल्ड हो गया तो हो जाएगा कि हमारा तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया. नाउ लेट C belongs to F and X belongs to W. W means intersection of I in I WI. This will imply what? C belongs to F and X belongs to WI for every I in I. ये उल्टा जो A लिखते हैं इसका मतलब होता है फॉर एवरी और फॉर ऑल, और जो उल्टा E लिखते हैं ऐसे वाला इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट. अगर आप लोगों को नोटेशन नहीं पता है बस इसलिए हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो प्रोबेबली हमें नहीं पता आप लोगों को फॉलो अप हो पा रहा है या नहीं नोटेशंस के रिस्पेक्ट में स्पेशली. ठीक है. सो इफ दिस x belongs to W which is intersection of each of WI, then this statement will imply this statement. And from here, since WI itself a subspace, so this will imply what? C into X belongs to WI for every I in I. जाएगा ना, सबस्पेस है WI. सबस्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा ना. बताइए. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. this will imply as what? CX belongs to intersection of I in I
wi, which is nothing but w. So our third property also hold. For any c in f, x in w, cx belongs to w, and therefore from equations 1 and 2 and 3 are assertions. Therefore assertion 1, 2, 3 and result 1, previous result of subspace test, and result 1, what we conclude? This w, which is intersection of this wi, is itself a subspace. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, सो दिस वाज आवर फर्स्ट रिजल्ट. आज हम लोगों ने पूरे क्लास में क्या किया? दो रिजल्ट्स प्रूव किए, दो थियोरेटिकल रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट थे. पहला कि ये कि अगर हमें सेट सब स्पेस प्रूव करना है तो हमें बस ये तीन प्रॉपर्टीज अपने W में चेक करनी है. दूसरा ये कि अगर हम कोई इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो उनका इंटरसेक्शन स्पेस भी, उनका इंटरसेक्शन सेट भी एक सब स्पेस फॉलो करेगा या सब स्पेस होगा. क्लियर? नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस यूनियन? कि अगर हम W1 W2 दो सब स्पेसेस ले रहे हैं, B सब स्पेसेस ऑफ V, देन W1 यूनियन W2 क्या होगा? Will this be a subspace? बताइए. यस मैम, होगा सब स्पेस. पक्का? Yes, ma'am. Subspace of V. अच्छा. तो सिद्धार्थ को माइक म्यूट कर लो. कर लो. एक आई का आवाज आ रहा है. W1 हमने V को लिया R2 ओवर R. फाइन. सब स्पेस है, सॉरी वेक्टर स्पेस है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं Rn ओवर R. n को यहाँ हमने 2 फिक्स किया विद यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. W1 हमने लिया कलेक्शन ऑफ x0 such that x belongs to R. ये हमारा सब स्पेस है V का. x बिलोंग्स टू R है तो x इज इक्वल टू 0 भी एक रियल नंबर होगा. 0 0 हमारा R2 का 0 वेक्टर है, बिलोंग कर गया. अब किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, जैसे x1 0 प्लस x2 0, देगा हमें x1 प्लस x2 0, फिर से इस W में जाएगा, राइट. और कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किए c इंटू x1 0, तो हमें क्या आएगा? c x1 कॉमा c इंटू 0, c इंटू 0 विल बी 0 एंड दिस विल बिकम c x1 कॉमा 0. ये दोनों भी W में जा रहे हैं, W1 में. तो क्या ये W1 हमारा मैम इसमें x1 0 प्लस x2 0, ये x1 प्लस x2 0 होगा ना. x1 प्लस x1 0 आप लिखिए. सॉरी x1 प्लस x2 0, इनके कंपोनेंट्स ऐड होंगे.
तो ये W1 हमारा सब स्पेस है, सब स्पेस है ना, तीन ही प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करानी थी। 0 0 भी बिलोंग Yes, कर ma'am, रहा है yes. ना W Yes, में। ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली W2 हमने एक दूसरा सेट डिफाइन किया जिसमें हमने फर्स्ट कंपोनेंट 0 लिया, दूसरे कंपोनेंट को y लिया जो कि y बिलोंगिंग टू R। Will this also be a subspace of V? होगा ना, y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 वेक्टर चला जाएगा, और किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करिए इसमें, 0 कॉमा y1 प्लस 0 कॉमा y2, ये हमारा फिर से क्या देगा, 0 कॉमा y1 प्लस y2, ये हमारा मेंबर है W2 का। और अगर c कोई नंबर है, रियल नंबर, उसमें हम 0 कॉमा y1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमें क्या देगा, 0 कॉमा cy1, ये भी हमारा मेंबर है W2 का, राइट। तो W2 Yes. सब स्पेस हो गया V का, R2 का। अब W1 यूनियन W2 क्या होगा, कैसे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, x0 एंड 0y, ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे ना, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, यूनियन हो रहा है ना, तो उनके जो मेंबर्स हैं उन्हीं को बस एक सेट में ले लेंगे ना। Yes, ma'am. अब हमें ये बताइए, ये दोनों मेंबर हैं हमारे W1 यूनियन W2 के, तो इनका सम क्या होगा, x, 0 प्लस 0, y, इनका सम क्या होगा, यूजुअल सम है, बताइए। x प्लस 0, 0 प्लस y, यही है ना, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड होता है, एंड दिस विल गिव अस x, y। विल दिस बी अ मेंबर ऑफ W1 यूनियन W2? ये हमारा W1 यूनियन W2 में है, Yes, ma'am. है कहाँ से आया है, W1 यूनियन W2 में तो ऐसे मेंबर्स हैं ना जिनके एटलीस्ट एक कंपोनेंट 0 है, नहीं है ना, नहीं x, y नहीं नहीं है मैम. नहीं है। So W1 union W2 is not necessarily a subspace. इंटरसेक्शन होगा पर यूनियन हो इसकी गारंटी नहीं है, गॉट इट। Yes, ma'am. Okay, so today we will stop the class here, and in the next Okay, ma'am. class we Thank you. will see some examples on that. If you get some time, please try this, you may take the pictures of this. मैम आई थिंक शाम को क्लास आज कैंसिल है, मॉडल पे नहीं दिखा रहा है। है भैया, क्लास ठीक है, है, उसको हम पता कैलेंडर कर में लेंगे।